Hello, welcome back to FinSmart. Today we'll be talking about two small cap stocks that are making waves in very different sectors. And just a disclaimer before I begin, I hold both the stocks in my personal portfolio and we are not SEBI registered. So before buying and selling, make your own decision. So first stock that we are going to talk about is Sona Precision Engineering. So we'll cover why this stock is a game changer for EV, aviation and robotics. So let's dive in. So to start with, if I have to give a glimpse of what it does, it produces high performance driveline components for ICE vehicles, for EV vehicles, and expertise in is in differential gears or electric powertrains. Recently, this company has also partnered with UK's company Equipmake to develop EV traction motors, and it is likely to grow in the electric mobility market. It is also into aviation, which can be a key differentiator for this company going forward. Recently इन्होंने एक MOU साइन किया है with IIT मद्रास के incubated company, the E-plane company for aircraft and drone propulsion systems. So while this company is not directly into defense right now, but going forward, it may, because the kind of components it is missing, the kind of engineering that this company is doing is niche, it is high valued and it is very critical. So कुछ generic components different companies can make, but the components that they are creating require very exact precisioning, and that's why they are a niche player and are able to command high margins. But if you look at the stock price, you will see that this stock, in terms of both the PE number and stock price from a 5 year, from a 3 year, and from a 1 year basis, is at the rock bottom. Primarily two reasons. First is US tariffs. 40+% of revenue comes from US. तो US tariffs की वजह से स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है. बट वन थिंग टू नो फॉर श्योर इज दैट दीज tariffs आर नॉट परमानेंट इन नेचर. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे मे गो अवे और एटलीस्ट रिड्यूस. अब वो 1 महीने में होता है, 6 महीने में होता है, 1 साल में होता है, that is a different thing, but the stock has already priced lot of that negative information. दूसरा is the ownership or the leadership issues. Unfortunately, I think in June 2025, Sanjay Kapoor, who was the owner of the company, he passed away, and there is a dispute of for roughly 30,000 crore ka property in Delhi High Court, between his wife and like the wife before that, Karishma Kapoor. I think that case is ongoing. So these two factors have played a part in the downfall of the stock price. बट दैट बीइंग सेड, स्टॉक के फंडामेंटल्स में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है. इट इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री. अगर इसका आप वो ये भी देखेंगे, इसका आप अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 5 years का, इट इज़ 27.85%. 5 year का अच्छा खासा मार्जिन है. 27.522 का. ROE इज़ डिसेंट, ROC इज़ ऑल्सो डिसेंट. PEG is on the higher side, but again, the kind of company it is, it will always command that sort of PEG. Debt nahi hai. It is almost a debt free company, and yes, going forward it is likely to do very well. Again, when it may materialize, it is yet to be seen. But आप देखोगे इसमें FIIs, DIs और promoters have got most of the holding. Public holding is less than 10%. So in short, Sona Precision Engineering gives जो इनका कोर काम है, दैट इज़ प्रिसीजन इंजीनियरिंग. इट गिव्स अ हाई टेक मोड, मेकिंग इट रेलेवेंट बियॉन्ड ऑटोमोटिव इन EV, एविएशन, रोबोटिक्स. एंड देयर आर शॉर्ट टर्म इशूज़ लाइक टैरिफ एंड ओनरशिप इशूज़, जिससे वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स रिमेन्स गुड. द सेकंड इंडस्ट्री दैट आई एम गोइंग टू, और द सेकंड कंपनी दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ डोम्स. तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू वुड हैव हर्ड ऑफ दिस नेम. तो दे सप्लाई ऑफिस पेंसिल्स, इरेजर, कलर किट्स, ऑफिस सप्लाईज. इंडिया में इट इज़ मोस्टली अ डोमेस्टिक कंपनी, बट दे आर ग्रोइंग देयर एक्सपोर्ट, बट द बेस इज़ वेरी स्मॉल. तो ये इट इज़ अ 2000 करोड़ प्लस कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. नेट प्रॉफिट इज़ गुड 200 करोड़ का. एंड द वन गुड थिंग टू नोट इज़ दैट इनका जो क्या कहते हैं प्रॉफिट ग्रोथ है इन दी 5 years, profit growth 5 years, somehow I can't see that number here, but if you see the sales growth for 5 years, sales growth for 3 and 4 5 years, it is excellent, and they also operate at a fairly high margin of 15%. So in the branded stationery landscape, they are the second biggest player after ITC. But one good thing is that their execution and their focus is quite focused, because ITC is a big conglomerate. So from that perspective and the growth rate they are having, तो अब आप बाकी का भी देख सकते हो, आप फ्लेयर का, लिंक का, लाइक
the sales growth is very low compared to domes. So very likely in coming future, they might be the biggest player in the branded stationery space. तो इनका एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं इवन बिफोर दैट दे आर ग्रोइंग फेयरली हैंडसमली. पर इन्होंने एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है उम्बरगांव गुजरात में टू इंक्रीज द कैपेसिटी. एंड देयर ऑलवेज इज़ अ ग्रोथ पोटेंशियल. दे कैन डाइवर्सिफाई इनटू रिलेटेड वर्टिकल्स, जैसे टॉयज़ हो गए, ऑफिस फर्नीचर हो गया, डिजिटल लर्निंग टूल्स हो गए. सो देयर आर मार्केट टेलविंड्स. राइजिंग एजुकेशन स्पेंड है इंडिया में, डेमोग्राफी यंग है, और पीपल आर विलिंग टू पे मच. तो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है स्टेशनरी प्रोडक्ट्स का. एंड स्पेशली इन बिग सिटीज़, अगर आप देखोगे दिल्ली, बेंगलोर या इवन इन 2 tier सिटीज़ जहाँ पर जेप्टो, स्विगी या ब्लिंकिट वगैरह चलता है, तो गुड नंबर ऑफ स्टेशनरी आइटम्स दैट यू सी दैट यू इम्पल्स बाय आर डोम्स एंड क्वालिटी इज डिसेंट. बट दैट बीइंग सेड, the company is at a high PE, 70 plus का PE है, but the growth rate also justified because PEG is again 0.5. तो it is reasonably valued from that perspective. So strategic advantage है क्योंकि brand recognition है, capacity expand कर रहे हैं, तो companies poised for long term growth. तो it should benefit from. और हाँ, इसका अगर metric भी देखते हैं तो ROCE and ROE are excellent. उसके अलावा मैं अगर इनका देखूँ, I think I forgot to discuss this for Sona, but इनका भी cash from operating activity is quite decent. So that thing is there. And lastly, if you'll also look at the shareholding pattern, so bulk of the shares are there with promoters, FIs, DIs. Public holding is less than 5%. So both the companies that we discussed, both Sona Comstar, which is in high-tech precision engineering, and Domes, which is a strong Indian-based consumption education stock, both these companies have rooms to have the room to do well in future. So yes, if you like the analysis, hit like and subscribe, and just follow us for the next set of videos. Thank you.